Hello children, how are you? I hope you all are doing well and you've started reading new books, new novels and all. Have you started practicing how to write a lot of things in English? And are you speaking in English as well? Right, that's really great children. Continue to do so. Okay children, and if you've not started yet, start doing it. Alright, so let's read this chapter. Okay, it talks about a day on the beach. That's the name of the chapter. So let's read the prologue. The poem is about two cows who always stayed within the boundaries of their fields, always grazing. On one fine day, they get an opportunity to go out of their boundary, and they decided to go to a nearby beach. They enjoyed a lot on the beach, wandering in sand, and they also went into the water. Later on, their owner brought them back to the farm. This poem presents the wish to be free and see the world around. So, bachcho, this poem focuses on freedom. It talks about being free, wandering around, looking at different things, exploring the world. So, इस poem में actually लिखा गया है cows के बारे में, जो रहती है farm पे. Okay, inside the farm, inside the boundaries of the farm. But एक दिन उन्हें chance मिलता है तो वो निकल जाती है beach पे. Okay, they go to the beach, they love the sand, they love the beach, they go near the water, they really enjoy on the beach. तभी उनका ओनर आता है और उन्हें फिर से फार्म पे ले जाता है. So this poem focuses on freedom. Now who likes to be bounded? No one likes to be bounded. Everyone wants to be free, wants to explore different things. आपको अच्छा लगेगा अगर आपको कोई बंद करके रखेगा तो? नहीं ना? Even you like to explore things? Okay, now let's read this further. Let's do the warm-up. Discuss if zoos are a good place to keep animals. Do animals survive better in captivity or in their natural habitat? So बच्चों सोचो इसके बारे में. क्या आपको लगता है कि zoos are a better place for animals? Do you think that it is right to keep them inside captivity? बंद करके रखना अच्छा है या should they go back to their natural habitat? बताओ, सोचो इसके बारे में and discuss with your friends. Okay. Teacher's tip. The teacher may start the lesson with discussion about the activities children love to do when they are bored. The teacher must encourage the students to share their answers with the class. So, बच्चों जब आप बोर हो जाते हो तब आप क्या करते हो? What do you like to do when you get bored? Think about it and discuss with your teacher and tell her the new things that you do or the activities that you love doing when you get bored. Okay? So now let's read this beautiful poem. Let's read. Two cows, fed up with grass field, farmer barged through barbed wire and found the beach. Okay? सो दो काउज होते हैं. ओके, दो गाय होते हैं जो फेडअप हो जाती है ग्रास से, फील्ड से, फार्मर से और भाग जाती है, फेंस तोड़ के निकल जाती है और पहुंच जाती है बीच पे. ईच मूव टू ईच. दिस इज अ बेटर प्लेस टू बी. अ स्ट्रेच ऑफ सैंड नेक्स्ट टू द सी. दिस इज द प्लेस फॉर मी. तो वो दोनों एक दूसरे से उनकी लैंग्वेज में बात करते हैं, मुंह करके बात करते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत सुंदर जगह है, दिस इज द राइट प्लेस फॉर अस. सिर्फ सैंड है और बीच है. एंड दे स्टेड देयर ऑल डे, स्ट्रेट दिस वे दैट वे, ओवर टू रॉक्स, पास्ट डिस्कार्डेड सॉक्स. ओके, तो वो वहाँ पे ही बीच पे ही पूरा दिन बिताते हैं. यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सब जगह को घूमते रहते हैं. जो लोग अपने सॉक्स छोड़ के जाते हैं उनको वो भी दिख जाते हैं. ओके, रॉक्स के पास तक जाती है वो. इग्नोरिंग द फ्यू पीपल दे मेट, इट वॉज़न्ट हाई सीजन येट. ओके, तो जब हाई सीजन होता है उसका मतलब है बीच पे बहुत भीड़ होती है. तो देयर वर अ फ्यू पीपल ऑन द बीच. इट वॉज नॉट अ हाई सीजन, देयर वर फ्यू पीपल ऑन द बीच, बट they ignored them. They just moved past and they just enjoyed themselves. They dipped hooves in the sea, got wet up to the knee. They swallowed pebbles and sand, found them a bit bland, washed them down with sea water, decided they really ought to rest for an hour.
ओके सो जो हूव्स होते हैं, मतलब जो उनके बूट्स होते हैं ना, जो काउस के, तो वो उन्होंने अपने सी के पास जाते हैं, उसमें अपना पैर डाल देते हैं, बहुत मज़ा आता है बीच पे ऐसे करते तो, और फिर वो समुंदर का पानी उनके पैरों तक, मतलब इट गॉट वेट टिल देयर नीज, ओके। फिर उन्होंने पेबल्स खाए, सैंड खाई, टेस्ट किया सब कुछ, बट उन्हें वो ब्लैंड लगा, तो उन्होंने वो निकाल दिया वापस, ओके। एंड फिर उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आराम। तो बच्चों, उसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू क्विकली स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस इन द परफॉर्मेंस ट्रैकर, okay? Both were sure they'd never leave here. Imagine they had lived so near and never knew. तो उन दोनों ने सोच लिया था कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ओके? इतने पास रहते थे, फिर भी उन्हें ये जगह नहीं पता थी। With a swamped move, they sank into sleep. Woke to the yellow jeep of the farmer, revving their feet from the incoming sea. This is no place for cows to be, he shouted and slapped them with seaweed all the way home. So, वो वैसे ही सोच के कि हमको वापस नहीं जाना है, वो वहीं पे सो जाते हैं। तभी फार्मर आता है अपनी येलो जीप लेके और उनको डंडा मार के लेके जाता है, बोल के कि ये जगह जो है ये काउस के लिए नहीं है, ओके, और उनको चिल्ला के अपने घर वापस ले जाता है। So this beautiful poem was written by Matthew Sweeney. और तभी वहाँ पे फार्मर पहुँच जाता है, जब वो देखता है कि ये दोनों सोई है, तो उनको डंडा मार के लेके जाता है, बोल के कि ये जगह तुम लोगों के लिए नहीं है. This is no place for the cows, okay? He slapped them, he shouted at them and took them back home in the yellow jeep. This poem was written by Matthew Sweeney, okay? So children, it really is nice to explore things, to watch things, but end of the day, we all have to rest. And where do we rest? At home. This poem was written by Matthew Sweeney. So children, I hope you've loved this poem, okay? So start quickly doing the back exercises and don't forget to read the difficult words, the important words and their meanings also. Okay children?